are the different exceptions are there, and how you are going to identify all these exceptions. Class not found, then connection not established, then SQL query sorry, not SQL query exceptions, sorry, class not found, all are the JDBC exceptions. In servlet format, 404 exceptions are there, 503 that numbers are there, where you say servlet is not defined. Then second exception is occurs, there is no proper communications between the web XML में उसका no proper interactions between the servlet. So this type of all exceptions are occurs in the servlet, and that I have explained you in the last lectures. The life cycle of a servlet, where we have to do what exact task we do in each and every phases, right? And then we come across with the two objects, that is a request parameter as well as the response parameters. Fine. So now, अब आपको बाकी के सर्वलेट के what are the different standardized objects are available and how we are dealing with these different standardized objects, that we have to do next 3-4 lectures में हमको we have to work on that, right? So we'll go one by one with all these objects. So what are the different standardized objects are available in a servlet programming? यही object रहता है, इसके अलावा और कुछ किसी के साथ अपने को deal नहीं करना रहता है. So what are the objects are available? Servlet request, servlet config, servlet context, request dispatcher, and send redirect. These are the standardized objects are available under your servlet. So what does servlet request do? Servlet request object is used to provide a client request information to the servlet, right? It send a client request to the servlet in what in which terms? It content type, the content length, right? Content length, content types are nothing but you are reading what type of data you are reading. Either you are reading a text file, either you are reading the HTML file, either you are reading the images. ये सब client के end से आप क्या क्या read कर रहे हो, that all information is sent to the server end, right? And with reference to this, you may have worked in the last semester, you are reading a form data, right? And you are sending that form data information to the servlet. ये program शायद आप लोगों ने काफी बार किया होगा. So in that process, we are using a servlet request object. Fine. Even it give you all the header informations. What are the different attributes are there? Can we change? We can change the attribute value of that servlet initial parameters, that we can do with the help of servlet request object. The second object is called as next object is called as your servlet configuration object, right? What this configuration object do? It will configure initialization जब आपका servlet होता है, init method जब call होती है. So whatever the information is required when you are initializing a servlet, that information will configure by using your servlet config object. Okay. So whatever configuration information is created by each servlet container, and these container pass this information to the during the initialization of your servlet, right? Since this information is available, कहाँ पे available रहेगी आपकी initial information? web.xml में रहती है. If you you maybe I don't know whether you remember or not, there is one, जैसे आप servlet name, servlet access is there, path, you specify the path through which you are accessing the servlet mapping is another tag is available. On similar manner, we are having init tag is also there in web.xml. In init tag, you are initializing some informations about the servlet. When you want to initiate the servlet, what are the initial informations you want, you can initialize it that init tag, right? So that init tag information can be accessed by using your servlet config object. For example, suppose you want to send some initial information of, let's say for example, आपके student के email ID, when your servlet gets start, you want to send your email ID to the servlet, right? Because you want to work on the email ID only.
So you are reading that email ID की file. So reading that email ID file की information you will available at init parameter in the web.xml, and by using servlet.config file config object, your servlet will read that initial information and then proceed to send the email to respective students. Fine. The next parameter is called as a servlet context problem, the context object. And this context object, it is created by again web container at the time of deploying the project. At the time of deploying the project, ये कब create होता है? जब initialization आपका servlet होता है. That time servlet config object will be inform the all these informations, right? Similar way, you are having information is available in web.xml. जैसे आपका init का tag रहता है ना, वैसे context tag रहता है. Under that context tag, there is information which is required when you deploy that servlet informations. Okay, so that deployment informations can be get it done by using the servlet context method. Servlet context, not method, object. The next object is called the request dispatcher object. This request dispatcher is interface which facilitate to dispatch the request to the another resources. It may be the another servlet, it may be another HTML page, it may be another JSP page, right? Servlet to servlet connect will be happen with the help of this request dispatcher. Then again, there are so many methods are available for each objects that we will see in detail. And send redirector is this is a method. HTTP response interface can be used to redirect and response to the another resources, right? So now next 2 week onwards we will working on all these 5 objects, and we will see in details how exactly these objects are work, right? Today we will be focus only on the servlet request object के साथ हम काम करेंगे आज के लिए. Fine. So in servlet request object is nothing but it is an interface which define the different method to handle the client request, right? इसको access करने के लिए there are two types of interfaces are there. Java एक servlet request interface is there, and java.servlet.http servlet request. These two interfaces are available. With the help of that, we can access all the client request. Fine. To access the client request, these are the different methods are available for us, right? Get attribute, it returns the attribute set on the requested object, right? Get attribute names, get content length. Content मतलब हमने लिखा था ना, set content किया था, right? We last lecture hello.java में हमने set contents किया था. That means we are sending the response back to the client. Here what we want to reading a data from the client. So instead of set content, we can say the get content type. That means we are reading what type of data we are reading. HTML file, image जो भी है वो यहाँ पे you have to specify it, right? इसमें से then get parameters, get parameter names, get parameter values. These are all different methods are available with the get request interface. Okay, so today we will explore this method and what exact information these methods are returning, that we are going to do it, right? For this purpose, initially we will work with these only three methods of servlet request object: get parameter, get parameters, and get parameter names, right? What the get parameter do? It take a parameter name. You take a parameter name as a parameter and return the value, return a string. यहाँ पे very important, return a string object representing corresponding value. And if this method return null if it does not find any parameter of a given name, right? So you may work in the previous semester, you may work to perform the addition of a two numbers किया होगा शायद आप लोगों ने. So what you did that time, by using the text box you are reading the two numbers, right? And in the form your client is supplying these two value, your servlet is supposed to read it. So servlet is using servlet.get context get request the nothing but servlet. This interface is there and it will read the parameters by using servlet request dot get parameter
value. Under that you are mentioning a name of your first number और उसको आपने टाइप कास्टिंग किया था नंबर के लिए. Why? Because this get parameter return you the string object. Fine. So you need to do the type casting over there whenever you want, right? Now instead of get parameter you can also use get parameters when you are reading a multiple value from a form. Okay, so specially used when you are using combo box or when you are using the checkbox. And get parameter names is nothing but it is returning a parameter name in the form में जितने parameters है उसके वो name return करता है. Fine. So today we are dealing with this all these methods, right? आपके इसमें से जो मेथड ऑफ सर्वलेट रिक्वेस्ट फॉर्म है इसके लिए हम लोग इसके साथ आज काम करेंगे. Fine. For that purpose, what we have to do? We have to create a form, write a name, first name, last name into the forms, right? And you accept it and you display that informations. Fine. The third उसके बाद क्या करना है आपको? You have to read the different marks, right? यहाँ check box से otherwise you provide a different marks to the students. 3 subjects के marks ले लो, physics, chemistry and the maths. When you do the submit buttons, you will perform the उसका addition or average of it. That is the second task. Third task is what? In the form you add a check buttons. Again ये होने के बाद next form create करो. वो form में क्या रहेगा आपका? The name of a student, class of a student. Class select करते समय you will provide them the drop box, right? BCA, BBA, MBA, MSc, right? Drop box में से you select the form का BCA का options. Once you select the BCA का options, then it will show you the checkbox की list. What are the subjects are available for them, right? If you select the BBA का options, then it will display the checkbox पूरा list of the things कि कौन से आपके उसके subject हैं. And the user can click on that respective checkboxes and you have to submit the task. ये काम आपको करना है. These are the 3 parameters. If you want to try, you can also read the radio buttons. लेकिन एक get parameter से name single value read करते हैं तो radio box भी read करते हुए आता है. उसमें कुछ ज़्यादा difficult नहीं है. This is your third form. और उसके बाद हमको और क्या informations करना है देखो. सर्वलेट सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या आपको सेंड करता है? It sends you, यहाँ पे लिखा होगा, what it do? It sends you the content type, content let, parameters name. So we read parameter names and parameter value. ये हमने read कर दिया, right? उसके बाद का function है we will read the header informations about the HTTP request में जो भी header information आती है that we will do it. So for that process what we are supposed to do? We are for reading the data we are using get header name की name नाम का functions रहता है. By using the get header name we will display all the header informations of a requested servlet, right? That 4 program आज हमको करना है. Agree? Step by steps. So and if you want आपको चाहिए होगा तो I will shall I show you or you will try it out first step by step? कैसे करना चाहते हो? हाँ? मैम show us. Okay, ठीक है. Fine. We will do one thing. I will show you. I will list out all the programs one by one. No issue. लेकिन उसके पहले मैं I will insist you. I am giving you the 10 minutes. For this 10 minutes, you try out at yourself. You find it out yourself, and then I will show you the things. Right? Ready-made नहीं देती हूँ. थोड़ा सा efforts लो. Fine. So let's start with the first part. Display the read the names and display that contents into the forms. Right? Shobit and Nirmit and all those who have left with your previous programs, right? Random number वाला जो रह गया है ना, उसको अभी रहने दो. Are you comfortable? Can we start with the form data? Ma'am, I will try my best. Or you will prefer to go for your random number के लिए?
मैम आपने जो पिछली क्लास में क्वेश्चंस दिए थे वो कर लिए थे, और सबसे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे ना प्रोग्रामिंग के, वो मैंने आपको मेल पे भी शेयर किए थे। हाँ किए थे। तो तो यू हैव अ आइडिया हाउ द सर्वलेट वर्क्स, यस राइट? मैम। यू हैव अ आइडिया बोलने से अलावा बोलूंगी कॉन्फिडेंस आ गया है। यस मैम, वो मतलब वो कोड भी गलत था, बट आई कैन ट्राई। हाँ ठीक है ना, गलत था उसमें, वो एरर सिंटैक्टिकल एरर्स थे, राइट? लेकिन कंसेप्चुअल द कोड इज करेक्ट, राइट? अल्गोरिदमिक वाइज कोड इज करेक्ट, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। यस मैम। ठीक है, तो इट्स मैं इंसिस्ट करूंगी कि आज के लिए क्लास के साथ काम करते हैं, और ये जो बचे हुए प्रोग्राम्स है वो होमवर्क जैसे लो और आप करके सबमिट करो, चलेगा? यस मैम। Still it is open to you, ये ऐसे कंपलसरी नहीं है। So let us start working with the first part. What you will do, you will read the two forms, right? two forms का फॉर्म में से two जो है वो रीड करोगे और उसको हम डिस्प्ले करेंगे, right? I am giving you the 10 minutes. You just think about it, and after 10 minutes I will show you my program. Is it okay? Swarangi, your laptop is working now? If you don't have a laptop, please write the code on a notebook. Fine? Please write the code on your notebook. Yes, ma'am. Okay? यदि लैपटॉप नहीं होगा तो भी चलेगा. Write it down on your notebook. Okay. So let's start. We will meet back at around I have 10:55. आपके इसमें कितना 10:55 हुआ है? We will again come back at 11:10. Meanwhile, you do the programming, only the first part, that is reading name and first name and the last name of a respective person. That's it. उतना ही काम हमको करना है, right? Done? Good. Ma'am, Yes. ma'am, my servlets are not working only, even the basic programs. Basic programs is not working. Okay. ठीक है, अभी के लिए तो थोड़ा क्लास के साथ काम करो, मैं बाद में देखती हूँ आपका प्रोग्राम. Okay. ठीक है, राइट इट डाउन ऑन द नोटबुक, नॉट अ प्रॉब्लम. अदरवाइज Yes. उसके ऊपर काम करो, देखते वो सर्वलेट के साथ क्यों नहीं काम करेगा. प्लीज यूज नेटबिन्स 8 एंड डोंट गो फॉर नेटबिन्स 12 के लिए मत जाओ. Ma'am, I've been using 12 only, that's why I think it wasn't मैं working. सो वो बाद में, अब जो भी करोगे ना वो रिस्टार्टिंग बाद में करो, अभी नोटबुक पे तो लिखना स्टार्ट करो. Yes, ma'am. ठीक है, सब क्लास Yes. के साथ चलते हैं. हाँ चलो. I will again make it very clear. Today we are working only with server request object. Okay, we will try out कौन से functions, कौन से हमको what task we try out. We try to find it out the parameter names and the value information of a form. We try to find it out header information of the forms, and these informations we can collect by using the servlet request object. Fine. So everyone will be on the जो लेट ज्वाइन हुए होंगे उनके लिए फिर से. So let's start working on it. Ma'am, we have to accept the first name and the last name. That's it, right?
ओके, डन विद द प्रोग्राम? हो गया सबका? जस्ट एक बार स्टेटस बता दो। Okay. So how many of you, please raise your hand, how many of you have finished with the program? Okay. Okay, fine. Shall I show you? Shall I just demonstrate you कि how the things work? Or you want? Yeah, yes, ma'am. मैम हाँ बता दो। 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट और रुक जाओ। ठीक है। Meanwhile, those who have finished with this program, they can proceed for the next. मैं एक काम करती हूँ, I will just show you the programs and whether you check कहाँ पे आपका wrong जा रहा है, चलेगा? और रुको 5 मिनट और रुको। यस मैम, ऐसा चलेगा। एक जस्ट बता देती हूँ कि क्या करना है, किस तरीके से जाना है। फाइन। ओके, नेटबीन्स। हाँ, इज माई स्क्रीन विजिबल? डेस्कटॉप विजिबल करती हूँ एक सेकंड। देखो, इज इट विजिबल? नेटबीन्स आर Yes, विजिबल? yes, हाँ ma'am. हाँ। आपको क्या करना है, दोनों का गेट और पोस्ट दोनों देखना है। हम लोग दोनों एक बार ट्राई कर लेते हैं। See, what we just want to read the data of first name and last name, and just we want to display it, right? And if you go back here, in a servlet request object will help you to perform this task, right? And with the help of get parameter methods, we will try to read these informations. Okay, so the information from the web client is in terms of the form. अभी हम लोग क्लाइंट हमें फॉर्म के में इंफॉर्मेशंस दे रहा है. सो आई हैव क्रिएटेड दिस फॉर्म वेयर you can say first name is here, last name is here, typical HTML का syntax, and we have input the submit button over here, right? And after submission of a form, your method is what? Get method. Okay, you are calling a method get, and in get methods, what action of your form is taking? It get connected to form data. It connected to the servlet name form data. जो servlet का नाम दिया हुआ है, form data नाम का servlet दिया हुआ है. Fine. देखो, so then what exactly we have written into the form data? So in my form data में क्या क्या information है? I will just delete all the comment. ये हमेशा when I open it, I will get this information. Fine. Now the submission is either by the कहाँ से हो रहा है हमारा सबमिशन? देखो, रीड डेटा, रीड फॉर्म में कहाँ से इंफॉर्मेशन हो रहा है? वी आर कॉलिंग अ मेथड गेट, राइट? वी आर कॉलिंग अ मेथड गेट, और गेट मेथड कॉल होने के बाद वी आर कॉलिंग अ विच सर्वलेट? फॉर्म डेटा सर्वलेट, right? So here we are in the source file, we are created this form data dot java का सर्वलेट क्रिएट किया हुआ है, राइट? इन एंड वी आर कॉलिंग अ मेथड. कौन सी मेथड हम लोग कॉल कर रहे हैं? डू गेट. दिस मेथड विल गेट कॉल बिकॉज आपका फॉर्म का रिक्वेस्ट गेट मेथड से रिक्वेस्ट हो रहा है. फाइन. सो इन माई फॉर्म डेटा सर्वलेट,
it will go to the service method. Under service method, it will call the doGet method, right? doGet method, you are accepting the information into the HTTP servlet request. देखो request object के साथ काम कर रहे हैं. And what is the name of Excuse your? me, ma'am. Yes. Yes. In my like servlet, it's showing process request Yes, something yes. instead of do Come. get. Yes, yes, I'm coming there. Kshitij, wait a minute. Okay. Huh? Wait a minute, I'm coming there. So do get request, and here you are having HTTP request object, servlet request that we are dealing with that, right? And here the name of your object is a user defined name. What your name you want, you can give it to them. Right? Similar way, this is a response object that we know we want to print the response to the end customer, right? And here doGet method, we are calling here process request method. If it is in NetBeans, you will go for the process request method. In doGet method, we are calling a process request method, right? And it will come to the process request method. Why it is so? See, the user can submit the data either by using the get method or it may be by using the post method, right? If it is get method, then in your form, in your servlet, if you have written do get method, then and then only your service method processed, right? If you don't have this method, instead of that, you are written only the do post method. You haven't written do get method. Then what? You will get error 503. That means the method is not at all specified in a servlet, right? So we don't know whether the user can write a get method or post method. To make a provision, NetBeans has done doGet and do both the methods they have mentioned, and both the method will do what? It will do process request. It will call the process request method. So all the logic what are written under the process request, it get proceed. Got it? So we will go. So once we go in my form, we have written get. So it will come in the form in the servlet. It will go to the doGet method, and again it call the method as a process request. So come here. Come to the process request part. In my process request part, ये हमेशा की तरह आपने जो पैरामीटर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास किए थे, इट इज हियर रिक्वेस्ट एंड अ रिस्पॉन्स, राइट? And again similar manner, to send a request back to the client end, response object is responsible. So we have to first set the type, what type of data we are sending to the client end. Here we said set content type is HTML. Okay, set content type is your HTML. Fine. And then we start and reading the data. Response dot get writer. We want to write the our output to the response object. Okay, response dot get write. What we have supposed to write? We have to write this much information. Fine. So we are writing this. If you want, you can put it. Otherwise, you can delete it. But it's the HTML part, so I prefer to write it down. So HTML tag, then header, title, everything is there. Then body part. In my body parts, what happens? In my body part, what we want? We want to read the parameters from the client end. Okay. So client end से information कौन से objects में आने वाली है? It is available into your request object. Okay. Servlet request. हम इस object के साथ काम कर रहे हैं. Right. So we this servlet request का user defined object name is a request. Okay. So the client end की तरफ से request is available in my request object, and by using the method get parameters we can read these information, right? So what is the name of in the form, what is the name of first name का name क्या है आपका? First underscore name. Okay, first underscore name. So get parameter, this is the name of your parameters. Request dot get parameters, it will read the second parameter name. It will read your second parameter name. Okay, देखो क्या कर रहा है get parameters. It take a parameter name as a parameters. It take a parameter name as a parameters, right? So it take a कहाँ गया अपना? हाँ, it take a name as a parameter method में. Okay, and what it do?
and return a string object. Return a string object representing the corresponding value. So it returns the value of that respective name. And if sometime it returns null when it does not find a parameter of a given name, then it will return a null value of that methods, right? So if that first name is there, then it will return. Last name is not there, then it will be written as a null. Fine. So this is my request. Web INX में check कर लो, web.xml में check करो whether that get associated or not. So this is a web.xml. In my ये देखो, this is your form data and you are mapping it with the form data, right? ये form data कहाँ से call होने वाला है? With this action case में से connectivity is there. Fine. So we will start. Run this HTML file. Write down the name here. The first name, last name, right? And when you do the submit button, that time the servlet get call. The servlet get call. देखो यहाँ पे आया आपका first name and last name. HTTPS localhost 8080 web application 1, that is your project का नाम जो था वो. This is your servlet name and question mark along with your first name का Anaga and last name का value is Vaidya. You get the value. Why? Because you are process the request by using the get method. Fine. Instead of get method, if I am writing post method, देखो यहाँ पे this screen is visible ना? Browser is visible to you? Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपके values दिख रहे हैं, हाँ? If I put it here, instead of that, I will put it as a post. Get के अलावा यहाँ पे post method में call करती हूँ. When I calling a post method, form data में क्या होगा? It will call do post method. Do post फिर क्या कर रहा है? फिर से it is calling the request process dot request method. Fine. So let's start. Fine. So now here you are passing this, right? And you press submit button. Now check. Form यहाँ तक आपका क्या है? HTTP localhost web application 1 and only the form data. No other information is available. Values नहीं आए देखो parameters के by using the post request. While ये previous servlet में क्या था आपका? You are calling this servlet by using your get method. So you the method उसके parameters के value यहाँ पे supply हो गए. Fine. That you are going to display these informations. Agree? अब next task क्या करना है आपको? In the next task, you will define here, let's say 3 और text box define करो जहाँ पे आप mathematics के marks दोगे, physics के दोगे, as well as chemistry के marks दोगे. And you write a button, that उनका percentage find out करना है, और you can say the जो भी करना है percentage and cancellation button. If you press the percentage, then it will display cancellation का बाद में बताती हूँ. If you click on the percent button, it will get calculated your percent. It will output will be your first name, your last name and your total marks display होंगे, और उसके बाद उसका percentage display होगा. Which is similar to this program. Fine. Yes, ma'am. हाँ, करके देखो. फिर से 10 मिनट इनफ हो जाएंगे उसके लिए. ओके, ट्राई आउट. और इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछ लो ये प्रोग्राम में. इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स प्लीज आस्क मी. यहाँ पे इसका नाम गलत देख के देखो क्या हो रहा है. फर्स्ट नेम हेलो मैम. बोलो. मैम मुझे 404 देखो, एरर आ रहा है. सर्वलेट का लिंकिंग नहीं हुआ है बेटा.
सर्वलेट लिंक जो web.xml में जाओ, web.xml में चेक करो, आपका लिंकिंग नहीं है। 404 मतलब उसको सर्वलेट नहीं मिल रहा है। इधर यू हैवंट एक्शन फॉर्म, एक्शन टैग, एक्शन केस में लिखा नहीं होगा आपने नेम प्रॉपर, और web.xml में उसको एसोसिएट नहीं किया होगा कनेक्टिविटी। ये जो इनका कुछ प्रॉब्लम होगा फिर। किसका? देखो ये web.xml में आपका सर्वलेट नेम और URL पैटर्न शुड बी सेम। ओके मैम कहाँ पे दिखना? web.xml में अच्छा, ये हाँ होना मैम वो है चाहिए, सेम, मैपिंग है। और उसका नेम, ये दोनों सेम होना चाहिए। हाँ, फिर फॉर्म में चेक करो, फॉर्म में आप कॉल कर रहे हो, प्रॉपर कॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक्शन के साथ। मैम आई डोंट थिंक एक्शन के साथ कहीं पे कॉल कर रहा हूँ। एक्शन के साथ क्या कर रहे हो? आई डोंट थिंक उसके साथ कॉल कर रहा हूँ। मैम देखो एक बार दिखाओ मैम। ये देखो फॉर्म का एक्शन और नेम ऑफ योर सर्वलेट, ओनली नॉट डॉट जावा, सिर्फ सर्वलेट का नाम। अच्छा इट इज नॉट जावा, क्योंकि जावा ये आपका बिजनेस लॉजिक रहता है जो आपका सर्वलेट एग्जीक्यूट करता है, राइट? लेकिन कॉल करते समय डॉट जावा नहीं, यू आर नॉट कॉलिंग अ क्लास, यू आर कॉलिंग यू आर कॉलिंग द सर्वलेट नेम। इसीलिए देखो ये आप web.xml में आपका रहता है ना, दिस इज योर सर्वलेट नेम और उसका ये क्लास एग्जीक्यूट होगा, राइट? क्लास नेम में भी डिफर। मैम हो रहा है, वर्क हो रहा है। हो गया शिव? यस मैम हो गया। ओनली लिंकिंग इज नॉट देयर, दैट्स इट। मैम 404 मतलब उसको, एक्शन नहीं डाला था मैम। हाँ 404 मतलब उसको सर्वलेट नहीं मिल रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। इसका यूआरएल कहीं तो भी गड़बड़ी है, उसको लिंकिंग नहीं हो रहा है। 503 बाकी के मीनिंग अलग अलग है, हर एक इसका नंबर का अलग अलग मीनिंग है। Okay, next 5 minutes for you. You should add the things, right? Add the marks. मैम मार्क्स का इनपुट कैसे लेंगे? टेक्स्ट बॉक्स ही रहेगा ना अपने पास, उसको इसीलिए मैंने बोला ना, you of course, otherwise how come you can take it? You need to convert it, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा यहाँ पे सर्वलेट में, okay? Because it's a returning a string value. We have only 3 functions get parameters के लिए। Yes. Oh, okay. You will Ali, you will take a number input, कहाँ से कैसे लोगे लेकिन आप? See, we have only the function to read the data is a get parameter's name, right? हाँ, एक सेकंड, क्या लिखा है आपने? Yeah, you can in HTML you can take it as a number things, right? लेकिन in servlet we are having the method. These 3 methods are there, right? Get parameters, get parameter names, and get parameters. These methods return you always a string object. Though you are providing it with the number format, but it returns you the string object. Okay, that's why we need to typecast it.
और कोई दूसरी मेथड नहीं है देखो कि जहां से आप पैरामीटर रीड कर रहे हैं।
Okay, done. Perform that read the marks and perform the addition. Sorry, percentage find out किया? Yes, please. Please raise your hand. Those are finished with the second program. Or do you Yes, want ma'am. second आपका हो गया? Please raise your hand. Okay. So still you're working. Other student, do you want time or shall I show you again? Yes, ma'am, we want time. Okay, okay. Go ahead with the time. And those who have finished with the second program, they can go for the third programs, right? Now, what you will do, you will write down the first name, last name, drop down list. In the drop down list, you will have BCA, BBA course. मतलब ये इसमें से वो select करेगा. And if he select the BCA course, then all the BCA के 2-3 subjects दे दो. That will be displayed. And if he selected the BBA course, then that course will be displayed, right? That course will be displayed and you checkbox के हिसाब से आप you will just check out that courses, right? And you do the submit button and your servlet will display all the कि आपका name ये है, आपका all the initial information of you. Fine. मैम क्लास वाला जो है वो ड्रॉप डाउन से लेना है सब्जेक्ट्स थ्रू चेकबॉक्स ना? मतलब जैसे आपका BCA सिलेक्ट होगा ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली मतलब आपके चेक बॉक्स आने चाहिए, BCA के सब्जेक्ट आने चाहिए. ओके, इफ इन द ड्रॉप बॉक्स इफ यू सिलेक्ट BBA देन BBA के सब्जेक्ट आना चाहिए और उसके हिसाब से द यूजर कैन सिलेक्ट द इन द चेक बॉक्स में आएंगे वो और यूजर सिलेक्ट द थिंग्स एंड योर सर्वलेट विल डिस्प्ले दैट कंटेंट्स, राइट? आपने ओके ये मैम. सिलेक्ट किया था, ये हुआ. अदरवाइज थोड़ा यहाँ पे मुश्किल होता होगा तो पहले ड्रॉप डाउन से लिस्ट से डिस्प्ले करो, रीड द ड्रॉप डाउन डेटा एंड रीड द चेकलिस्ट डेटा फर्स्ट एंड देन वी विल ऐड दिस लॉजिक ओवर देयर. ओके, take more 5 minutes. हॅलो, बोला. अगं नाही, मी तुला त्या दिवशी शोधत होते की मला ऑलरेडी फाईल आहे सगळं ते, इव्हन त्या ह्याच्यामध्ये तो लिंक पण दाखवतोय की एवढे एवढे क्रायटेरिया आहेत, तर मला ते एक्झिस्टिंग डेटा ऍड करायचा होता. म्हणजे आहे तोच फाईल, मी फक्त अप करते ना. तर मग तू त्या दिवशी तू ह्याला होतीस. हो 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 हो. कुठल्या आहे ना? हो ना, ते ओव्हरराईट झाले ना. ते काय माहिती नाही, एक झालेलेच नाही ते, जे झाले ते देशपांडे सरांचेच झालेले आहेत. माझे परत ओव्हरराईट झालेत किंवा काहीतरी गोंधळ झालेला आहे. आत्ता माझं लेक्चर आहे, 2:30 पर्यंत लेक्चर आहे, त्याच्यानंतर मी करते. हा, हो 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 हो.
Yes, done. यस मैम परसेंटेज वाला हो गया. हो गया. अब थर्ड के ऊपर जाओ, ड्रॉप डाउन बटन रीड करो और चेक बॉक्स रीड करो. पहले वो करो और फिर हम उसमें डायनामिक इफेक्ट्स देंगे. एंड इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर से आ जाओ, चाहिए होगा तो. Next program is what? We will read drop down buttons and we will read the check boxes. Excuse me, ma'am. Yes. मैम ड्रॉप डाउन से विल रीड द MBA MCA वो सब. हाँ एंड हाँ. मैम फिर चेक बॉक्सेस का यूज क्या है इसमें? कोर्सेस, जावा, जो भी अच्छा सब्जेक्ट है दैट ना. इज इन द चेक बॉक्स. हाँ, चेक दैट इज इन द चेक बॉक्स. और तो मैम कितने? इसमें एक 2-4 लोग, मुझे सिर्फ वो डायनेमिक इफेक्ट आपको मतलब वो प्रोग्रामिंग करने हैं अपने को. क्या एज यू मतलब करेंटली हाउ टू रीड द चेक बॉक्स का मल्टीपल वैल्यूज. गेट पैरामीटर से ओनली वन यू रीड द सिंगल वैल्यू ना. यू वांट टू रीड द मल्टीपल वैल्यूज, राइट? So that I ओके want, or then after dynamic effect. If I read this, then how I can show this? ओके मैम गॉट इट. Okay. Those who want to take a break, take a 5 minute ka break and come back again. Huh?
Hello, ma'am. हेलो। Yes, ma'am. हाँ बोलो। तो मैंने क्या किया है, आई हैव डन वो BCA लिया एज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड उसके बेसिस पे द सब्जेक्ट इज गेटिंग डिस्प्लेड इन चेक बॉक्स हाँ एंड BBIT का भी अलग 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 सब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, और वो चेक बॉक्स सिर्फ डिस्प्ले ये कर लिया क्या? वो चेक बॉक्स मतलब डाला है। आई उसके बाद आई थिंक सो आई हैव टू क्रिएट अनदर सर्वलेट फॉर द दैट्स वाई ऐसे कि रुको, उसके लिए रुको, रिडायरेक्ट और ये मेथड्स करना पड़ेगी आपको। इसके लिए जस्ट वैल्यू डिस्प्ले करके करो, दैट्स इट। हाँ वो हो रही है। हाँ दैट्स इट। ओके, चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन का हो गया, वैल्यू डिस्प्ले फाइन। नाउ go to the next part, huh? That means you can handle the data जिनका हो गया है. How many of you have finished with the select और checkbox का value? Go for the next program. Those who are done with checkbox और drop down के साथ, हाँ, और जिनको डेमो चाहिए होगा तो मैं बताती हूँ डेमो आप लोगों को. You can go for the next program, that is a header information display. That get parameter values से भी कर लिया. By using the value you will get parameter values. Just try out that function also. And the next program is take the header. We want to display the header information of the servlet. Okay. सात्विक वो काम करो आप, सात्विक एंड डैनियल. यस, ड्रॉप डाउन और इसका हो गया. स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, प्लीज रेज योर हैंड दोज हु हैव फिनिश्ड विथ ड्रॉप डाउन लिस्ट और चेक बॉक्स के लिए. मैम Ma'am, ड्रॉप could you डाउन का please show us? ड्रॉप डाउन लिस्ट इज ओवर. मैम एक बार एक्सप्लेन कर दो. किसका? ड्रॉप डाउन का? दोनों का मैम, ड्रॉप डाउन एंड चेक Yes, बॉक्स. ma'am. ओके ओके ठीक है, कर देती हूँ. हाँ, मेरे इसमें मैंने क्या किया था, ड्रॉप डाउन में सिर्फ एक कंट्री ली थी. 1-2 मिनट में मुझे मैं करती हूँ. एक दो मिनट में चेक बॉक्स का करके करती हूँ, वो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है.
Displaying on. Okay, I will show you the thing. See this. Hello, I'm audible. Yes, ma'am. हाँ. You want to read the checkbox और ये check करना है आपको, right? So in that form, I have written here.
in the select name course options, here the value is what BCA, or you can say the or here you have to specify it as a BBA. And here you are having the check boxes where you say name of this check boxes is subject, common name, and you are having Java, data structure and networkings are the subject. हाँ, in my form, ये देखो form data में आप उसको read value कैसे करोगे? For reading the value of your ये जो है पहले drop down button की value read करने के लिए we are taking a get parameter as a course. यहाँ पे इसका नाम जो दिया था, this drop down button has a course का course name, so we specified here as a get parameters request dot get parameter as a course. Okay, and out dot print ln, so it will display the value of your course information, right? अब checkbox में क्या है, आपको ये you want to read all these three values, right, with the name of subject subject subject. So it is storing in terms of your it is storing in terms of a array. आप जब value read करोगे तो वो array में store होगा. Fine. So for that process, what you will do, you can go for here. We are what request dot get parameter value of subject. It is returning a multiple values, right? And this is storing into the array. And by using a for loop, you can display the array contents. Okay, we can display the array contents. Try it out. देखो run हो रहा है या नहीं हो रहा है. You have a lecture, another lecture. Yes, ma'am. एक second, 34. These are the maths value. 54. Here you are saying, let's say BBA, and Java is selected, networking selected, and do submit. Right. What happens? This देखो ये पूरा हो गया, BBA हो गया, लेकिन subject की value on और on second subject की on आ रही है. That means these two are selected. But what we want? We want a value of that, the contents which you have selected, right? So इसके साथ you required for now you find it out. सिर्फ get parameter values से काम नहीं हो रहा है. What exactly we are required? Which functions we are required to execute it, right? Get parameter names करके जो है उस function से आपको you will get all the values of your function. Fine. Yes, ma'am. करके देखोगे? Yes, ma'am. Okay, I will download your attendance list. Okay, आज के इसका I will make a again attendance list. I will make your folder बनाऊं, आज बनाऊं या next week बनाऊं? Ma'am, next week. Ma'am, next week. Okay, fine. I will make it as a next week. In the next week, we have to work with remaining parts, that is a servlet config और servlet config के साथ काम करेंगे next week के लिए, config and context के साथ, right? Okay, इसका ma'am. header part is left, that we will do it initially. और इसका जो check box और ये है radio buttons read करना है, please try out yourself for it, right? Okay. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. चलेगा. Fine. So try out for all remaining parts. फिर next उसके बाद के